वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वी विल स्टडी दिस चैप्टर फ्रॉम बेसिक्स। एक एक बेसिक्स पढ़ेंगे ताकि ये चैप्टर बन जाए सुपर इजी। गाइज, आपके डाउट्स के इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए अभी डाउनलोड करें स्नैपसॉल ऐप को। क्वेश्चन की फोटो को क्रॉप करके आप उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं फॉर पीसीएमबी। गाइज, ये सॉल्यूशन आपको एक्सपर्ट के थ्रू मिलता है। सो डाउनलोड द ऐप नाउ। फॉर डाउनलोड लिंक चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज, वेक्टर्स क्या होता है, आइए एक बारी वेक्टर्स पे नजर लाते हैं। देखो, दो क्वांटिटी होती है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, द वन इज द स्केलर एंड अनदर वन इज द वेक्टर। जैसे डिस्टेंस है, लेट्स से आई एम सेइंग कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर। सो ए से बी का डिस्टेंस हो या बी से ए का डिस्टेंस हो, बात तो एक ही है। लेट से एक गिलास है, उसमें पानी है 100 ml। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, आइए जानते हैं। लेट से मैंने एक ड्रॉ किया वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो। व्हाट इज अ वेक्टर? इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब उसमें लेंथ होती है और डायरेक्शन होती है। क्लियर? इज इट क्लियर विथ यू? तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज अ वन रे। इट हैज अ मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, LENGTH, एंड डायरेक्शन तो आपको पता है। सो लेट्स से सपोज करिए मैंने एक लाइन को ड्रॉ करा आपके सामने। जस्ट अ मोमेंट। एक लाइन को ड्रॉ करा, देखा आपने, इसकी एक लेंथ भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर हो गया। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस? इज इट वेक्टर? नो, इट इज नॉट अ वेक्टर। Why it is not a vector? Because it does not have a direction. So let's say ये वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। सो ज्ञान की बात, नॉलेज की बात, वेक्टर को आप रे भी कह सकते हो, है ना? रे कह सकते हैं ना? व्हाट डू यू थिंक गाइस? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन है। गाइस, वेक्टर को डिनोट करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। लेट से ये है ओ से लेकर ए तक, तो हम इसको ए बार कहते हैं, या ए के ऊपर एक एरो ड्रॉ करते हैं जो डिनोट करता है इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। गाइज, एक और कंसेप्ट है पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर की क्या बात है? लेट से आपके पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, यू हैव एक्स एक्सिस, यू हैव वाई एक्सिस। सो आप जीरो से 0 0 0 इन कोऑर्डिनेट से, ठीक है, ओरिजिन से अगर कोई वेक्टर ड्रॉ करते हो तो इसको हम बोलेंगे ए बार। ठीक है, या फिर हम इसको ओ ए भी नाम कह सकते हैं। तो ये क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हम इसे पोजिशनल वेक्टर कहते हैं बिकॉज इट हैज ओरिजिन 0 0 0। ठीक है, प्लीज इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हैव अ नोट ऑफ इट। गाइज, अगला कंसेप्ट जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आइए मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करके बताता हूँ। लेट से ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, दैट इज 2,2,2। ये स्टार्ट हो रहा है ओ से, खत्म हो रहा है ए पे। ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0। तो इस वेक्टर को हम क्या कह देंगे? एनी गेस व्हाट यू वुड कॉल दिस वेक्टर? थिंक अबाउट इट। यस, यू आर राइट, we will call it as O से A vector. Why we will call O से A? Because यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, सो ओ ए वेक्टर इज ए बार माइनस ओ बार।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो व्हाट इज ए बार? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 2 2, ओ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 0 0 0। सो डिफरेंस माइनस करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यह जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। गाइस थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको कैप की वैल्यू समझाता हूँ क्या होता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कैप। गाइस हाउ डू यू ड्रॉ और प्लॉट अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस? लेट से आप इसको एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है 2 2 2। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये कार्टेशियन फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है? कार्टेशियन फॉर्मेट है। लेट से ये पॉइंट ए है, तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा होता है वेक्टर फॉर्म। हैव यू हर्ड ऑफ वेक्टर फॉर्म? हैव यू हर्ड ऑफ वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म क्या होता है? ए को हम छोटू ए कह देंगे और उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टू है आई कोऑर्डिनेट, आई स्टैंड्स फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप, जे स्टैंड्स फॉर वाई कोऑर्डिनेट, k stand for z coordinate, so this is 2k times, so this is how we will denote। देखो कोऑर्डिनेट्स को हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वी विल सेपरेट ऑल द एलिमेंट्स बाय कॉमा, बट व्हाट अबाउट वेक्टर फॉर्म? वी विल ऐड ऑल द कोऑर्डिनेट्स। इज इट क्लियर विथ यू? आई होप इट्स क्लियर विथ यू। लेट्स से वी हैव वन मोर पॉइंट। लेट्स से let's say we have a coordinate as 3 2 1। how you will represent it in a vector form? This is a bar, which is nothing but 3i cap 2j cap minus 1k cap, sorry plus है तो plus 1। so please have a note of it। then we will see the one more concept, ठीक है। आपको पता चल गया कि हम वेक्टर को x कोऑर्डिनेट्स को i कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को j कहते हैं, z कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं। हैव अ नोट ऑफ इट। ओके, सो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी सम मोर कंसेप्ट। ओके चलिए, so guys we have one more concept in front of us। let's say 2 points are given। a is the initial point, b is a terminal point, starting from a ending to b। let's say a coordinates is 1 2 3, b coordinates is 4 5 8, ठीक है। what is the initial point? a। what is the terminal point? b। therefore it is vector b। we will call it as vector b from a to b। this is ab। is it clear with you? is it clear with you? very good। so always whenever you go from one point to another, you always calculate distance by second minus first। this is always a rule। it is always b minus a। I hope it's clear with you। why do we take like this? just take an example। this is 0 coordinate, this is 1, this is 2। tell me the distance between 1 and 2। can you tell me the distance between 1 and 2? Yes, you're right। you will calculate b minus a। so b is what? 2, a is what? 1, 2 minus 1 is 1। so this is the ab's length। let's say this is 4 and this is 12। so what would be 4 minus 12? that would be absolutely 8। so this is the 8 one। आई होप आप समझ पा रहे हो कंसेप्ट को, कि समझो ये 4 यूनिट दूर है, ये 12 यूनिट दूर है, दिख रहा है। O से A 4 है, O से B 12 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 8 होगा। आपको कैसे पता चलेगा? B की लेंथ माइनस A की लेंथ, सो 8 आ जाएगा, ठीक है।
सो व्हाट इज द बी माइनस ए? बी इज व्हाट? आपको दिख रहा है 4 5 8, ए इज व्हाट 1 2 3. सो इफ यू सब्ट्रैक्ट देम तो कैसे हो जाएगा? आप आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हो इफ यू हैव अ टाइम. सो बी को हम लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप. ए को आप लिख सकते हो -1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. So what would be the final answer? 4i minus 1 is 3i cap, 5a minus 2 is 3j cap, 8 minus 3 is 5k cap. So I hope it's clear to you. ठीक है. So guys, there is one more concept of magnitude of vector. Right, just write down the concept of magnitude of vector. So in order to find the magnitude of vector, there is a formula. Let's say there is a vector a bar. It is xi cap plus yj cap plus zk cap. If we wanted to find the magnitude of vector, we denote it as like this. This is so called as magnitude of vector. And the formula is x square plus y square plus z square. Always try to remember vector's magnitude is always positive. So let's say you have a vector, let's say b bar equals to 4i cap plus 2j cap plus 2k cap. So what would be the magnitude of vector b? 4 का square, 2 का square, 2 का square. So its magnitude would be under root of 24. So this is how we find the magnitude of vector. Please have a note of it. फिर अपन आगे के concept को study करते हैं. Please have a note of it. So guys, let's see one more concept. There is a one concept of collinear vector. A vector, two or more vectors said to be collinear if their directions are same or opposite. So let's say this is a example of collinear vector. ठीक है, this is A, this is 0, this is B. So 0, so O to A and O to B have different direction, but they are collinear because they lie on a same line. Also such represent a parallel line, hence they are parallel vector as well. So can I say OA is parallel to itself? Yes. ठीक है. Vector which are non-coplanar are not coplanar are non-coplanar vector. So guys, do you live in a house? Yes, very good. So in a house there are 4 walls. Do you remember last time we have seen our house? हमने एक घर देखा था. आपका स्वीट होम में कितनी दीवारें होती है? So I'm not able to draw it, but just try to imagine it, okay? This is the first wall. This is the second wall. This is the third wall. This is the fourth wall. Let's say this is the raw structure of your home, okay? Let's say on this wall, try to imagine on this wall, I draw a vector which is this one. On this wall, I draw a vector, this one. Can I say they lie on a different plane? Let's say, just assume this is my mobile, okay? So I draw one vector over here in this direction and I draw one vector over here. Can I say they lie on a same plane? Plane means what? Surface. So this is a different surface, this is a different surface. So these are non-coplanar. They lie on a different plane. Let's say you have 4 walls. If I just draw one vector here, one vector there and one vector here, all these 3 are non-coplanar because they does not lie on same surface. So guys, let's move to one more concept, like and unlike vector. The vector having same direction are called as like and different direction are unlike. Coplanar आपको पता है, they lie on a same plane.
ठीक है. Also parallel are also called as coplanar because if someone is coplanar, if two vectors are coplanar, that means they lie on a same surface. Okay. uh, Scalar multiplication. Let's say if you multiply m with a vector a bar, ठीक है. So this is m a bar. There is not a major difference. You will multiply scalar, that's it. It's okay. Everything is fine. So let's say a bar is equals to let's say 4 I cap plus 2 j cap minus 1 k cap. Let's say if you multiply minus 5 with a bar, okay, so it would become 5 4s are 20 I cap 10 j cap 5 k cap. That's it. Please have a note of it. So guys, next question is dot product. Have you heard of dot product? So this is a property of a vector and there is one cross product. So let's say you have vector a bar 4 I cap 2 j cap minus 3 k cap. This is minus 2 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap. So just have a look at how we utilize this concept. देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. देयर इज अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर. क्या बोला मैंने? देयर इज अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर. राइट द फर्स्ट वन एंड राइट द सेकेंड वन. सो व्हाट इज फर्स्ट? 4i 2j minus 3k minus 2i minus 3j plus 4k. So we multiply scalar components. Scalar means number. So let's say x-axis के scalar number क्या क्या है? Let me change the color. Y-axis के scalar number क्या क्या है? Z-axis के scalar number क्या क्या है? So if you multiply them, this is 4 into minus 2, that is 8. Plus, by default is plus. 2 into minus 3 is minus 6. Plus minus 3 into 4 is minus 12. So what is the final answer? 4 2s are 8, 2 3s are 6, minus 26. So we call it as a dot product. ठीक है? Okay, let's see one more question on dot product. Let's say this is a vector in front of you and you need to find a dot product. Let me change the value. Only j. Okay. So let's say if you wanted to find a bar dot b bar. So if you wanted to find a dot product, multiply the components. This is 4, this is minus 3. What is 4 into minus 3? It is minus 12. Plus, this is 1 with j, this is minus 3 with j. 1 into minus 3 is minus 3. So again, minus 3 into 4. So this is how you are doing, only multiplying scalar components. So minus 27. So please have a note of it. It is all about what? All about what? Dot product. Got it? Because there is a dot in between. There is a dot in between. Please have a note of it. Guys, let's see the cross product. What do you mean by cross product? There is a formula to calculate a cross product. So I have to reduce the size of this thing. Let's wait. चलो थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर लेते हैं. लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. ठीक है, लेट्स टेक अ डुप्लीकेट ऑफ इट.
So we need to find a cross product, right? Forget about dot. We are talking about cross product. So there is a formula to calculate cross product, that is A cross B. So what is a cross product? That is determinant. How do you find cross product? This is just a determinant. ठीक है? So this is A cross B. ऊपर आ जाएगा I cap, J cap, K cap. So A के कंपोनेंट्स आ जाएंगे 4, 2, -3. B के कंपोनेंट्स आ जाएंगे -2, -3, 4. So this is the method to find the cross product. Cross product क्या होता है? डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वन थिंग, और बस क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने आती है आपको. So let's find the determinant value. चलो, I'm giving you 30 seconds. Your time starts now. Just try to find by yourself. इतना तो क्लियर हो गया है कि the first step is write ijk. Second step is a के components, that is 4, 2, -3, and then the components of b, that is -2, -3, 4, -2, -3, 4. Just try to solve it. I'm giving you 30 seconds. जल्दी से ट्राई करिए एक बारी. See guys, time is over. So what we'll do for I cap, delete the row and column. This is how we solve it. So 4 2s are 8, 3 3s are 9, plus minus of j cap. What is a j cap? That is delete row, delete column. 4 4s are 16, 3 2s are 6, 16, 4 4s are 16, 3 2s are 6, -6. K cap, delete row and delete column. 4 3s are 12, negative, plus 4. So final answer is what? So let's write here. Okay. There is no space. 17 I cap, 10 J cap, -8 K cap. So this is how we find cross product. It's useful to find a coplanar vector. ठीक है? Whenever you're trying to find coplanar vector, we use this concept. So this is a question in front of you. I'm writing a question in front of you. Please have a note of it. Then I'll give you some questions. Okay? I'll give you 4 to 5 questions that would be extremely helpful for you. Just have a note of it. Okay, there are some homework question for you. Let's say this is A. A, B, C, D. 2I cap plus 3J cap minus 1K cap. D is what? 4I cap plus 2J cap
minus 8k. You need to find these values. Need to find a dot b, also b dot c, c dot a, ठीक है, a क्रॉस b, a क्रॉस c, and then a क्रॉस d. ठीक है, you have only 60 seconds your time start now. Also we have one best question. I'm giving you one more question of prove that. There is a verify question. ठीक है, verify a dot c is equals to c dot a. You have to verify it. There is one more question on verify. A dot c is equals to c dot a. Also, you need to verify a cross c does not equals to c cross a. Getting a cross c does not equals to c cross a. This is a verify question. और जो नीचे वाला क्वेश्चन है, just a simple question. You need to find a dot product. So guys, please have a note of it. फिर आगे बढ़ते हैं. Please quickly all solve all 6, 7, 8 questions. ठीक है? You need to solve these 8 questions. क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट निकालो एंड वेरीफाई दीज कि क्या ये सही है. You have only 2 minutes. Your time starts now. Quickly फटाफट करिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. तो गाइज ये तो मैंने सिखाया ही आपको. दिस इज अ पोजीशन वेक्टर. ए बी इज बी माइनस ए, ए सी इज सी माइनस ए. ओके. Magnitude of vector. So there are some properties of vector. So first property is addition of vector. So let's say a plus b and b plus a is the same thing. So in vectors, if you add a plus b or b plus a, you will get same value. There is also associative property. Let's say there are 3 vector. If you add 1 plus 2 then 3 or 3 plus 2 then 1, that's absolutely okay. Also, if you add 0 to the vector, there is a no change. What about subtraction of a vector? In subtraction of a vector, a minus a becomes 0. What about scalar multiplication of vector with 2 vectors? Let's say you are going to multiplying 2 with a bar and b bar. You will get final answer as 2 times of a bar plus 2 times of b bar. This is how we treat. So there is nothing new about it. What about m plus n into a bar? You will multiply the same with bracket. M n a times of vector. Let's say there is a 5 into 4 times of a bar. So you will treat it as 20 times of a bar. There is nothing much difference. So जनरल अलजेब्रा की प्रॉपर्टी और वेक्टर की प्रॉपर्टी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है. ठीक है. See, the next concept is negative of a vector. What about negative of vector? Let's say I draw a vector. This is A, this is B. A is initial point, B is terminal point. So write it as vector AB. ठीक है. But if you write BA, this is a wrong one. You have to give it negative sign. Got it? Are you getting my point? What about negative of a vector? This is a vector. Okay, this is a vector. But if you write BA, is it correct to write? No, because the direction is flowing from A to B. If you write B to A, this is a negative of vector. That's it. Please have a note of it.
What about magnitude? Magnitude is same. If you find AB's magnitude or BA's magnitude, both are same. Please have a note of it. And always try to remember magnitude is always positive. So there are some types of vector. Uh, Zero vector, its value is 0. Unit vector. Unit vector is what? Its magnitude is 1. We'll study it later. Equal vector. Two vectors are said to be equal. They have equal magnitude and same direction. Okay, that's good. Badhiya baat hai. So guys, there is one more basic which we need to understand is angle theta between two vectors. So this is angle theta between two vectors. So let's see. Let's say you have vector A bar, that is something. Let's say you have a B bar vector, that's something. Okay. Now if I'll tell you find angle between A and B. So what you will do cos theta is equals to A dot B. This is A dot B. Magnitude of A, magnitude of B. Okay. Kindly write it down 10 times. Yes, dear student, 10 times. So do you know how to find a magnitude? You know that. Do you know how to find dot product? Congratulations, you know how to solve the question. So on these type of question, you will see the question in exam. So that's now very easy for you. Let's say there is a question in front of us. Let's zoom it. तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन है अपने सामने. This is A vector. This is B vector. Got it? What would be the dot product? Dot would be 1 into 1, that is 1. I'll change a color. 1 into minus 1, that is minus 1. Minus 1 into 1, that is minus 1. So what would be the final answer? 1 minus 1 minus 1, that is minus 1. So A dot B becomes minus 1. No issues. What about magnitude of vector first? So if you find magnitude of A, so components का square कर लो. 1 square, 1 square, minus 1 square. Root 3. So that's root 3 for this one. What about magnitude of B bar? That is root 3. So root 3 is 3. So cos theta is minus 1 by 3. So if you shift cos to another side, that would become theta is equals to cos inverse of 1 by 3. Got it? Very good. Let's say I'll give you one more question. Okay. Let's say A is equals to 4 I cap plus 1 j cap. And this is 8 I cap plus 8 j cap plus k cap. ठीक है. So what is A dot B guys? 4 यहीं पे कर लेता है ना. 4 8 जा 64. 8 1 जा 8. There is 0 k cap. Just look at a positive view. अच्छे से देखो. If there is nothing in return, you can write it as 0 k cap. So that's 0. So find the magnitude of this thing. 4 square 16. This is under root of 17. इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 64 64. कितना होता है 64 64? 128 plus 1 127. So this is how we find the angle between two vectors. So please have a note of it. कृपया लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. Please have a note of it. So guys, there is a property of vector. If there is a vector A bar,
if you take a dot of a bar with a bar, you will get magnitude of a bar का square. Let's do it. ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर्टी कि a का a से डॉट लोगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा. सो लेट्स से दिस इज अ थिंग इन फ्रंट ऑफ यू. You need to find a dot a. What is the dot of a with a? So just write a over here. 4i. So why should I waste my time writing this? मैं तो उसको डायरेक्ट लिख लूंगा. 4 2 1. ठीक है. So 4 4 za 16. 2 2 za 4. 1 1 za 1. So can I say this is a 21? What about magnitude of a bar? That is 16 plus 4 plus 1. So hence proved. ठीक है. So you can see that from this I can conclude that magnitude of a bar square is equals to a dot a. Please have a note of it. It was a really good question as well as ये जो प्रॉपर्टी है इस पे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. जस्ट नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं. So the next question is a dot b is equals to b dot a. If you take a dot product of two vectors, what I'm saying, if you take a dot product of two vectors, let's say this is a vector a and vector b. If you take dot product of a dot b or you take b dot a, you will get a same answer. So there is a question in front of you, you have to back test it. This is your responsibility to do a back testing. So chaliye, you have only 30 seconds, your time start now. Just try to prove this property. Come on, let's do it. On this property you would be able to solve 4 marker question, 6 marker question. So let's say you just solve, I also solve. Let's see, देखते हैं किसका जल्दी आता है. So a dot b क्या आ जाएगा? -8 6 -4 -6 is the answer. What about b dot a? By default plus. So therefore a dot b is equals to b dot a. Let's see projection of a bar on b bar. Have you heard of projection of a bar on b bar? Projection सुना है कभी? Have you seen projector? Sony's projector. So you can watch a movie on it, okay? On TV screen. So this is so we called as a projector. इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर बोलते हैं. इन द सेम वे देयर इज अ प्रोजेक्शन ऑफ, मतलब परछाई भी बोल सकते हो. लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए बी. You need to find the projector of AB on AC. So how you will find? There is a shadow like this. ठीक है. So this is called as, this is a wave which is called as projection of AB on AC. So there is a formula to do it. You don't need to worry about it. So if you wanted to find projection of A on B, so what I'm telling, projection of A on B. So can you see that A का B पे projection चाहिए? So
न्यूमरेटर यू विल फाइंड a डॉट b, डिनोमिनेटर वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ b बार. ठीक है. So I'm giving you one more question. Okay. Projection of B on C. Projection on A on K. So how will write it? A on C है ना. On C मतलब नीचे C का मैग्नीट्यूड. On K का मतलब नीचे K का मैग्नीट्यूड. और ऊपर आता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. कृपया लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ता है.